Hello, dear children. Welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 4. Children, this is your science book and the name of your book is Science Horizon Inspiring Tomorrow's Innovators. So, children, today we are going to start with a new chapter and it is chapter number 5 of the book, and the name of the chapter is Human Body and its Needs. So let's start with the chapter. So here we are going to learn about what are nutrients and what is our balanced diet. We do many activities like playing, reading, walking and talking. So these are a few of the activities that we do daily. We need energy to do all these activities. So इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए we all need energy. From where we get energy? हमें ये energy कहाँ से मिलता है? Food gives us energy. So ये जो भी energy हमें मिलता है किसी भी काम को करने के लिए, वो कौन देता है हमें? That is given by food. Food also helps us to grow and protect us from many diseases. Food जो है हमें grow करने में help करता है and it also protects us from many diseases. Thus, food is essential for our survival. We eat a wide variety of food. हम बहुत सारे varieties of food खाते हैं. The food we eat depends on its availability, our taste and our body requirements. So जो भी food हम खाते हैं वो depend करता है 3 factors पे, and the 3 factors are the availability of the food. Food कौन सा food available है, our taste, हमारा taste कैसा है, and our body requirements, हमारे body को किस तरीके के food की ज़रूरत है. These 3 are the factors जिस पे depend करता है our food. Now let us now learn more about the functions of various nutrients and their main sources. What are nutrients? Substances present in food that help our body grow strong, healthy and function properly are called nutrients. So वो सारे nutrients जो help करते हैं हमारे body को, वो चीज़ें जो हमारे food में present रहती है हमारी body को grow करने में help करती हैं strong, या फिर healthy रहने में, या फिर properly function करने में help करती हैं. So these are all the nutrients. Nutrients help us in the following ways. So there are many ways in which nutrients help us. So let's read about them. They provide energy to our body. So ये हमारे body को energy provide करते हैं. They help our body grow. They help in repairing our body when we are hurt or ill. So ये हमारे body को help करते हैं, repair करते हैं जब भी हम क्या होते हैं, हर्ट होते हैं, मीन्स चोट लग जाती है या हम बीमार पड़ जाते हैं. दे हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी. ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं. देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड. सो अभी हमने पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है. अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो देयर आर टोटल 5 मेन न्यूट्रिएंट्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न. The first one is the carbohydrates, next the proteins, fats, vitamins and minerals. What are carbohydrates? Carbohydrates क्या होते हैं? Some food gives us energy to do work. So कुछ food है जिसमें energy होती है जो हमारे work करने में help करता है. Carbohydrates are the main source of energy for our body. So carbohydrate क्या करता है, हमारे body को energy प्रोवाइड करता है. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स. सो दैट्स वाई इन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. शुगर एंड स्टार्च आर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. राइस, व्हीट, पोटैटोज एंड कॉर्न्स contain starch here. So children, you can see the picture of the items that contain a large amount of carbohydrates. Sugar, honey, jaggery and fruits such as mangoes, bananas and pineapples
contain sugar. So ये जितने भी यहाँ पे items लिखे हैं, these all contain sugar or carbohydrate in them. Growing children, people who play sports and people who do heavy physical work require a great amount of carbohydrate. So जो growing children हैं, बढ़ने वाले बच्चे, वो लोग जो स्पोर्ट्स खेलते हैं या वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हैं, all these type of people require a large amount of carbohydrates. You should eat food that are rich in carbohydrates so that you are full of energy to play and study. So हमें वो फूड खाना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ताकि हम कैसा फील करें, हम फुल ऑफ एनर्जी फील करें, हम अच्छे से प्ले कर सके और स्टडी भी कर सके. नाउ व्हाट आर प्रोटीन्स? सम फूड हेल्प्स अस बिल्ड आवर बॉडी. सो कुछ फूड है जो हमारी बॉडी को हेल्प करता है बॉडी के टिश्यूज को डेवलप करने में. प्रोटीन हेल्प्स बिल्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. प्रोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हेल्प करता है बिल्डअप करने. They also help in repairing our body parts and healing wounds. So ये जो है हेल्प करते हैं हमें किस चीज़ में? बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में, और जो भी हमें चोट लगती है, जो भी हमारे वाउंड्स होते हैं उनको ठीक करने में. प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. सो प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. मिल्क, चीज, कर्ड, एग्स, nuts, peas, bean, meat and fish are some food that are rich in protein. Now, growing children and young adults should eat food rich in protein so that their body can grow strong and healthy. So, जो भी growing children हैं या फिर young adults हैं, इन्हें protein rich food ही खाना चाहिए so that their body can grow strong and healthy. So, here you can see the picture of protein rich food is given in front of us. Now, the next topic is what are fats? Like carbohydrates, fats are food that give us energy. Carbohydrates की तरह fat वो food है जो हमें energy देती है. So they are also energy giving food. इसलिए ये energy giving food. Fats give much more energy than carbohydrates. Fats जो है हमें ज़्यादा energy देते हैं carbohydrates से भी. Oil, butter, ghee and nuts are example of food rich in fat. So ये जो यहाँ पे items लिखे हैं, these are full of fats and they help us in giving a lot of energy. We must eat enough fat as they help keep our body warm. So हमें जो है enough amount में fat लेना चाहिए ताकि हमारी body को ये warm रख सके. Fats also help keep our hair and skin healthy. Fats हमारे जो है body में जो hair होती है या फिर skin होती है, इसे भी healthy करते हैं. Our body does not need too much fat. हमारी जो body होती है उसे ज़्यादा fat की ज़रूरत नहीं होती है. This is because even small amount of fats give much more energy than carbohydrates. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो है अगर स्मॉल अमाउंट में भी हम फैट लेते हैं तो भी वो हमारे बॉडी को इनफ एनर्जी पहुंचाती है जितना कि कार्बोहाइड्रेट भी ना पहुंचाता है. इफ वी ईट लॉट्स ऑफ फैट, अगर हमने बहुत सारा फैट खा लिया, इट गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी एंड मेक्स अस अनहेल्दी. सो अगर हमने ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैट लिया है तो इसका मतलब वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और हमें अनहेल्दी बना देगा. सो हियर यू कैन सी चिल्ड्रन द पिक्चर ऑफ आइटम्स आर गिवन दैट आर रिच इन फैट्स. What are vitamins? Some foods protect us from diseases and keep us healthy. So कुछ फूड आइटम्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं डिजीजेस से बचाने में और हमें हेल्दी रखते हैं. विटामिन्स आर फूड्स दैट प्रोटेक्ट अस. सो विटामिन्स कुछ ऐसे फूड आइटम हैं
जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. सो विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. सो इसीलिए विटामिन्स को हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स. दीज आर vitamin A, B, C, D and K. Carrots, pumpkins and green leafy vegetables such as spinach contain vitamin A. So यहाँ पे कुछ items के name दिए हैं children. These are rich in vitamin A. Carrots, pumpkins and green leafy vegetables. So these are rich in vitamin A. And milk and milk products, papayas, melons, eggs, fish and broccoli contain vitamin B. So these food items are rich in vitamin B. Lemons and oranges contain vitamin C. So जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर विटामिन सी होती है बहुत ज़्यादा. Egg yolk, milk and fish contain vitamin D. So जो egg yolk होता है उसके अंदर विटामिन डी होता है. Egg yolk, milk या फिर fish. We get vitamin D from sunlight too. और अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो you can enjoy sunlight because we get vitamin D from sunlight. What are minerals? So just like vitamins, minerals too help protect our body from diseases. तो जैसे कि विटामिन्स वर्क करते हैं वैसे ही मिनरल्स भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिसीजेस से. सो मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. इसे मिनरल को भी प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है. आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड पोटेशियम आर सम मिनरल्स. सो यहाँ पे कुछ मिनरल्स हैं which protect our body. We should eat food that contains these minerals. So हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें ये सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं. Spinach, apples, pulses and oats are rich in iron. So here children, some food items are given. Those are rich in iron, which is needed for the formation of our blood. So as you know, ये जो आयरन होता है वो ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इसलिए वी शुड ईट दीज टाइप ऑफ फूड आइटम्स. मिल्क एंड चीज आर रिच इन कैल्शियम. सो मिल्क एंड चीज जो है इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है. कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ. Bananas, tomatoes and oranges contain potassium. So here these items इनके अंदर होता है पोटेशियम एंड पोटेशियम हेल्प्स इम्प्रूव आवर नर्वस सिस्टम. पोटेशियम हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है. वी गेट आयोडीन फ्रॉम सी फूड एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट. आयोडीन हमें सी फूड से मिलता है. क्यों? क्योंकि जो सी फूड होता है वो सी में होता है और सी में होता है नमक. सो आयोडीन वी गेट फ्रॉम salt and iodine is important for the brain development in child. So बच्चों के अंदर अगर ब्रेन डेवलपमेंट करनी है then they should get proper iodine. It may be noted that a food item can have more than one nutrient. So किसी भी फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. For example, a banana is rich source of carbohydrates as well as minerals. जैसे कि यहाँ पे एक बनाना का जब एग्जाम्पल लेते हैं हम तो हमें पता चलता है कि बनाना में कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं बट उसके साथ इसमें मिनरल्स भी. व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? नाउ लेट्स लर्न. अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए. विटामिन्स, मिनरल्स, एवरीथिंग वी वांट. सो वी कैन गेट ऑल दीज थिंग्स थ्रू अ बैलेंस्ड डाइट. सो व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? लेट्स रीड. द फूड वी ईट इज कॉल्ड आवर डाइट. जो भी फूड हम खाते हैं वो क्या है? हमारा डाइट है. A diet that contains sufficient amount of all the nutrients as well as enough water and dietary fiber is called the balanced diet. So वो डाइट जिसके अंदर sufficient amount of nutrients हो, means हर चीज proper amount में हो as well as enough water और water भी enough quantity में हो and dietary fiber और डाइटरी फाइबर्स भी होने चाहिए.
This type of meal is called balanced diet. We all need to eat a balanced diet to be healthy. So healthy रहने के लिए हमें balanced diet ही लेना चाहिए. Water and dietary fibers are important parts of the balanced diet. So water जो होता है और जो dietary fibers होते हैं ये हमारे balanced diet का एक important part है. Water. To keep our body healthy, we must drink 8 to 10 glasses of water. So हमें 8 to 10 glasses of water daily पीना चाहिए. We cannot live without water. Water helps our body absorb nutrients from food. So water क्या करता है हमारी body में जो भी nutrients होते हैं उसे absorb करने में help करता है. Water also removes waste from our body. Water हमारी body से waste को भी remove करता है. In the form of sweat. Sweat means पसीने के रूप में. In summer months and in the times when we sweat a lot, we must drink more water. So जब भी हमें ज़्यादा sweating हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए. Food such as watermelons, cucumbers, lettuce and orange contains water. So ये जो food items हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, these contain a large amount of water. Here you can see watermelon and cucumber. Two of the examples are given. Children, here you can see a picture of a balanced diet is given in which all the items are included which are required. Carbohydrates, fats, proteins, and you can see green leafy vegetables. Everything is included and the proportion is also given. ये किस proportion में होना चाहिए? And look at the proportion. Everything should be there in our diet, but in a particular proportion, not more than that. Dietary fiber or roughage. Dietary fiber or roughage is the part of the food that adds bulk to the waste form in our digestive system. So dietary fiber या फिर roughage क्या है? ये पार्ट है फूड का जो क्या करता है, जो ऐड करता है, एड्स बल्क टू द वेस्ट फॉर्म. वेस्ट फॉर्म को बल्क में ऐड करता है इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. इट इज वेरी यूजफुल इन मूविंग वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी. सो हमने जो भी फूड खाया है वो धीरे धीरे वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी में वाटर के थ्रू मिल जाते हैं. सो जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड वेस्ट एंड इट इज वेरी नेसेसरी कि वो वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर निकले. Although roughage does not provide nutrients, it is useful in removing digestive waste from our body. So हमारी बॉडी से वेस्ट को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें roughage की जरूरत होती है, डाइटरी फाइबर की जरूरत होती है. It is useful in removing digestive waste from our body. We should therefore eat food that contain dietary fiber. So हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा हो. Food such as green leaves, vegetables, grains such as cereals and pulses, and most fruit contain dietary fiber. So children, here are a few examples given जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि you can get the roughage from which part of the food. Here is some example given of some fibers are given here which act as roughage also. Now, cooked food and raw food. Cooked food अच्छा है या फिर raw food अच्छा है? Which one to be eaten? Raw means कच्चा food. That we are going to learn. We cook some food before eating and eat some other food without cooking. So कुछ food है जो हम पका के खाते हैं और कुछ food है जो बिना पकाए भी हम खा लेते हैं. Uncooked food is called raw food. वो food जो हम नहीं पकाते हैं उसे हम raw food कहते हैं. Raw food such as fresh vegetables and fruit should be washed well before they are eaten. So जो भी raw food होता है उसे हमें पहले अच्छे से क्या करना चाहिए? We should wash it. अच्छे से wash करना चाहिए and then we should eat. We cook many types of food. हम जब बहुत types of food खाते हैं. Cooking makes
मोस्ट फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी। तो जब भी हम फूड को कुक करते हैं तो क्या होता है, वो जो है फूड को टेस्टी कर देता है या फिर सॉफ्ट बना देता है। कुकिंग ऑल्सो किल्स जर्म्स इन फूड, बट वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू ओवर कुक फूड। हमें केयरफुली इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमें फूड को ओवर कुक नहीं करना चाहिए। Food loses its vitamin and minerals if it is overcooked. अगर फूड को हमने ज़्यादा पका दिया तो क्या होगा, उसके अंदर जो भी विटामिन्स या फिर मिनरल्स है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। We have different food requirements. So हमारे पास different food requirements है. All of us do not need the same kind of food. हर किसी को सेम तरीके के फूड की जरूरत नहीं होती। Different people need to eat different types of food depending on their age and the kind of activities they do. So लोग जो है, लोगों को अलग अलग टाइप के फूड की जरूरत होती है। कैसे, किस बेसिस पे, ऑन देयर एज, उनकी एज क्या है या फिर वो किस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, इस पर डिपेंड करता है द फूड दे बॉडी वांट। Children need to eat more protein as their bodies are still growing. So बच्चों को जो है ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है क्योंकि उनकी जो बॉडी है अभी भी ग्रो कर रही होती है। Children also need to eat food that is high in carbohydrates. बच्चों को ऐसे फूड की भी ज़रूरत होती है जो कार्बोहाइड्रेट्स में भरपूर हो, बिकॉज दे आर एक्टिव एंड नीड मोर एनर्जी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है because they are active. People such as athletes and laborers who do a lot of physical work needs to eat more carbohydrates too. So ऐसे लोगों को भी carbohydrates ज़्यादा खाने चाहिए and need more energy to work. Compared to children, elderly people do not need lots of protein and carbohydrates. So children के comparison में जो elderly people होते हैं उन्हें जो है ज़्यादा प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत नहीं होती। Their body requires less energy as they are comparatively less active. इनकी बॉडी को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो लेस एक्टिव होती है। How do we keep food safe? फूड को हम कैसे सेफ रख सकते हैं? Food gets spoiled when not stored properly. तो फूड को अगर हम प्रॉपर्ली स्टोर नहीं करेंगे फिर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कैन मेक अस इल एंड वी कैन प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय प्रिवेंटिंग। हियर आर अ फ्यू वेज टू प्रिवेंट फूड और टू प्रिजर्व फूड। सो फूड को प्रिजर्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर हमने ऐसे स्पॉइल्ड फूड को खा लिया तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। So what are the ways in which we can prevent food from getting spoiled? The first is refrigeration. You can keep most food safe for a long time by keeping them in the refrigerator. So fridge में रख के हम food को safe रख सकते हैं. Now the next is freezing, जमा देना. Food such as meat, fish and some vegetables can be preserved for longer time by freezing them in the freezer. तो फ्रीजर में बंद रख के हम इन्हें अच्छे से फ्रीज करके जमा के हम इन्हें ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रख सकते हैं। द नेक्स्ट इज ड्राइंग। सर्टेन फ्रूट्स कैन बी ड्राइड। सो कुछ फ्रूट्स हैं जिन्हें हम ड्राई कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। ड्राइंग रिमूव्स वाटर फ्रॉम द फूड। ड्राइंग से क्या होता है, जो भी वाटर कंटेंट होता है फूड में वो गायब हो जाता है। दिस प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर अ फ्यू मंथ। और इसकी वजह से फूड जो है कई महीनों तक spoiled या फिर खराब नहीं होता। Now the next process is canning. Some foods are packed in cans and sealed so that they do not get spoiled. So कुछ फूड ऐसे हैं जो कैन में हम पैक कर सकते हैं, उन्हें सील कर सकते हैं ताकि वो खराब ना हो। Canning preserves food for a few years. So canning से हम फूड को कई सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। Now let's quickly recall what we have learned here. Substances present in food that help our body grow strong, healthy and function properly are called nutrients. There are 5 main nutrients found in food: carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. The food we eat is called our diet and uncooked food is called raw food.
Now let's quickly come to the question and answers. So children, the first question here is, what are nutrients? So nutrients are substances that are present in food that protects our body from different diseases. Write two examples of each food rich in the food. So here children, we have to write the example of each food, and we have to write down two examples. So here the first is carbohydrates, and the example of carbohydrate is rice and wheat. Now the next is proteins, and the food rich in protein is milk and curd. Next, fats. फैट्स में क्या आएगा आपका ऑयल एंड बटर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रफेज, एंड रफेज में आएंगे आपके वेजिटेबल्स एंड pulses. So children, these are a few examples. You can write any of the examples that you like. Now give reasons why proteins are said to be the bodybuilding food. So the proteins are said to be the bodybuilding food because they help in developing the tissues. That's why it is called bodybuilding food. How are water and roughage an important part of balanced diet? So water and roughage is an important part of balanced diet because whatever food item that we eat, that is needed to be digested and taken out from our body. And for taking out them from our body, we need this roughage and water. So like this children, you have to answer these questions. And children, I hope that you have understood the chapter, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay related.